ICSE Class 9 स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सीरीज। यू ऑल मस्ट नो दैट काउंसिल इज आस्किंग कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मोर एंड मोर एवरी ईयर। तो तुम लोगों को भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए तैयार होना पड़ेगा। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस होते हैं? जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ रट्टा मार के चले जाएंगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। तो चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ये सीरीज। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमने लिया है चैप्टर 1 मेजरमेंट्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन फिजिक्स से। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द क्वेश्चन टेल अस। Let's read the question. It is an MCQ question, very important. A student measures the length of a pencil using a ruler whose 0 mark is broken. Understand what is the question telling us? There is a student who is trying to measure the length of a pencil, okay, but he has such a kind of ruler whose 0 mark is broken. एक ऐसा ruler जिसका 0 mark टूटा हुआ है. For example, suppose this is the length of the pencil and now he is using the ruler to measure the length of the pencil, but the ruler does not start from 0 mark because its 0 mark is broken. So let's assume it's starting from 2 centimeter mark. हम ये assume कर रहे हैं कि इस ruler का start point is 2 centimeter है। तो क्या वो इस ruler से इस pencil का exact length को measure कर पाएगा? Yes, he will be able to do it. But how? Let us see. So what should the student do to measure the length of the pencil? Option A says start measuring from the first visible mark, which is in this case 2 centimeter, and subtract that reading from the final reading. Next option says start measuring the first visible mark and add that reading to the final reading. Third option says measure from any mark and report the reading directly. And D is guess the missing length. तो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखोगे तो मान लेते हैं कि इस पेंसिल का एक्चुअल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं। लेट अस अज्यूम दैट द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल, इफ इट इज मेजर्ड यूजिंग करेक्ट एंड नॉन ब्रोकन रूलर, मान लेते हैं कि बिना टूटा हुआ रूलर से अगर उसे मेजर करें तो करेक्ट इसका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम इस रूलर से मेजर करें जो 2 सेंटीमीटर मार्क से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कितना रीडिंग बताएगा इसका? व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड रीडिंग इन दिस केस? ऑब्वियसली 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी 0 से लेके 2 सेंटीमीटर ये जो लेंथ है वो तो टूटा हुआ है, दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द रूलर ऑलरेडी। सो इट विल शो 12 सेंटीमीटर। यूजिंग दिस ब्रोकन रूलर, इफ यू ट्राई टू मेजर इट where it is starting from 2 centimeter, if I am starting from 2 centimeter and trying to read the length of the pencil, it will give me 12 centimeter observed reading. But now what do I have to do? We have to subtract this 2 centimeter from this observed reading. That means from this 12 centimeter, if I subtract the 2 centimeter, I will get the correct reading 10 centimeter. तो मुझे subtract करना है observed reading में से that initial reading from where I am starting the reading. वो first visible mark का value को मुझे observed reading से subtract करना है, add नहीं करना है। Are you getting the point? So which is the correct option? You can see option A, start measuring from the first visible mark and then subtract that reading from the final reading. Final reading means from the observed reading. So I hope you have understood the concept behind this question. Now, this is a series which I have started. I will be doing competency-based questions for physics and chemistry both, and regularly I will be posting the videos. So if you don't want to miss any of the competency-based questions, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon. See you all in the next video.